So today's problem is basically uh, creating a copy of a linked list which has the next pointer but also has a random pointer. I mean each node, in addition to having the next pointer, also has a random pointer. And how we will do that? It's a pretty simple problem. I mean it's not that complicated. So I'll just bring up the code and then I'll explain the steps. So yeah, before explaining, I think the intuition is, for example, suppose this is the linked list. ये आपका जो linked list है, right? And uh, so मतलब हम क्या करेंगे basically for every node we'll create a copy of the node containing the value of the node in adjacent to it, and then after that copy the random pointer to it and then do that in sequence. So मतलब ऐसा करेंगे कि यहाँ पर तो ये बन गया है एक नोड, एक और नोड भी ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे सारे नोड बनाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में मतलब लास्ट में ये जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इनिशियली हम जो लिंकेज है वो ऐसे बनेगा नोड्स के बीच में, एंड देन फाइनली ये लिंक्स को ब्रेक करके विल जस्ट जॉइन देम एंड देन रिस्टोर दिस लिंक अगेन, राइट। क्योंकि लाइक इसको बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए हमको ये वाला पॉइंटर को हमको तोड़ना पड़ता था, तो उसको लास्ट में रिस्टोर करना पड़ेगा। सो वो भी करेंगे, लाइक विल जस्ट एट द एंड रिस्टोर दिस बिकॉज intermediately this pointer will go here and this pointer will not be here and this pointer is here, but at the end what will happen is we will see something like this, जहाँ पे ये वाला पॉइंटर इसका पॉइंटर जो जो कॉपी वाला लिंक लिस्ट है उसका पॉइंटर is pointing to the next particular node of that copied linked list, and the पुराना जो linked list original linked list है उसका भी pointer restore हो जाता है. So that is the basic thought behind this problem, and now let's go into the code and see how this exact thing is getting implemented. तो कोड में चलते हैं। तो बेसिकली पहले क्या करेंगे हम, बेसिकली देखो क्या कर रहे हैं, हम एक कॉपी बना रहे हैं, कॉपी ऑफ द न्यू करंट वाले। हमने करंट को हेड में डाल दिया, राइट। एंड देन हमें कॉपी बनाना है, कॉपी नोड बना रहे हैं जो कि वैल्यू बस कॉपी हो रहा है यूजिंग द वैल्यू यूजिंग द कंस्ट्रक्टर नोड कंस्ट्रक्टर वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू कॉपी, एंड देन copy dot next equal to current dot next. That means let me delete this. What are we doing? uh, यहाँ पर copy dot next पहले equal to current dot next किया, then what next, then current dot next equal to copy किया, वही चेन बना रहे हैं, ठीक है। current dot next equal to copy किया, and then what are you doing, current equal to copy dot next, मतलब current को इधर मूव कर दिया। पहले current pointer was pointing to here, right, and now this pointer has to be moved, so this will be moved from here to here, that is what we are doing, right। तो मतलब ऐसे ऐसे करके this current pointer will keep on moving till it becomes null, and then will be मतलब ये ऐसा टाइप का, मतलब current node followed by the copied node and then followed by the next node, ऐसे करके हम will we create a मतलब modified intermediate linked list, okay। And then what happens in the next iteration, then we just copy the random pointers, right। current dot next dot random is equal to current dot random dot next, right। मतलब current dot next मतलब क्या, current का जो copy है उसका random pointer will be current, करंट का जो कॉपी है उसका रैंडम पॉइंटर क्या होगा, उसका रैंडम पॉइंटर होगा करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट। सो दिस इज रियली क्लेवर। देखो क्योंकि करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट क्या है, करंट डॉट रैंडम का कॉपी कहाँ पे है, उसके नेक्स्ट में है, राइट। तो बेसिकली कॉपी, सो वी हैव टू पॉइंट द रैंडम ऑफ द copied node of the current node to the copied node of the random node which is residing in the next, right। That's why this line makes sense, ठीक है। क्योंकि जो मतलब अगर देखें तो मतलब हम हमको इसको रैंडम, दिस इज स्लाइटली रॉन्ग। सो so basically what will happen is, suppose this is the random pointer, and now this node will have another copied node, so this pointer now has to point to the copied node of the random node, right। तो ये इसको point कर देता, that's why it is like current dot random, so this is current, right। at an instant मैं इसको पीछे move करता हूँ,
So at this point, okay, so this is current. So current dot random dot uh, random dot next, ये next है, right? Current dot random dot next is equal to no, sorry, current dot next dot random. So this is current dot next का random pointer किसके equal होगा? Current dot random dot next, right? So yeah, it's simple enough, right? And then we'll go and then we'll move the current to the current dot next to next. Why current dot next to next? Because current इधर है and current dot next to next मतलब current का next ये है and then उसका next ये है, तो basically हमको current को इधर ही move करना था, तो जो कि हो रहा है, right? And then okay, now the last iteration में क्या होता है, हम basically जो original list है उसको restore करते हैं and copy list को भी हम basically दोनों list को separate बना देते हैं. How are we doing this? Copy को हम current dot next करेंगे, current को हम head पे set करेंगे, ठीक है. न्यू हेड विल बी और हेड डॉट नेक्स्ट बिकॉज ये हमारा न्यू हेड है, जो कि हेड डॉट नेक्स्ट है, ये हेड है, राइट? हेड डॉट नेक्स्ट है एंड देन कॉपी इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे इनिशियली. सो दिस विल बी द कॉपी, ठीक है, ये कॉपी होगा एंड देन व्हाट विल डू कि current dot next equal to copy dot next, obviously because we want to break this and put this, so current dot next will be copy dot next, which makes sense. And then current and then copy dot next equal to copy dot next dot next, because copy dot next will be this, right? So this has to be dismantled and this has to be, this pointer has to point here, so which is done by this line, right? Copy dot next equal to copy dot next, and then we'll move current equal to current dot next, because this pointer has already been reset and now this current equal to current dot next would effectively result in this motion. Pardon me, where is the pointer? This is current dot current dot cs. Yeah, so this looks complicated but it's pretty easy, and yeah, that this is the total explanation. This did not take a lot of time because it is simple enough. Hope you understood this problem. If you have not understood, I think I would advise you to rewatch this and then you'll probably understand. So आज के लिए इतना ही. I'll see you in the next video. Thank you.